कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हैं। जी हां, प्रियंका गांधी को आज यानी 10 सितंबर को लखनऊ आना था, लेकिन वो गुरुवार को ही आ गई थी। एयरपोर्ट पर विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्र मोना ने उनका स्वागत किया। फैसला लिया गया जो ये है कि कांग्रेस हम वचन निभाएंगे नाम से प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। ये यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से 12,000 किलोमीटर तक चलेगी। यात्रा बड़ी ग्राम पंचायतों और कस्बों। प्रियंका गांधी के लखनऊ पहुंचते ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया है, जिसके चलते एक बार फिर मिशन 2022 को लेकर प्रियंका गांधी के यूपी पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कटाक्ष किया। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी So folks, back on Saturday, fun times, again elections, Congress, BJP, like I told you yesterday, the biggest strength of the BJP is the weakness of the Congress, and especially Rahul and the big target on his back, right? So you got to get beyond that. They've got a lot of things going for them. 75th year of independence coming up, it's their baby. It's not BJP's baby at all, right? So, and UP, they've got a huge amount of problems. But let's see what kind of stuff, Congress has got to focus on and what kind of stuff it does. Right now, it's basically should be to able to maintain its strength in Punjab, get its stuff going in Uttarakhand and in Goa. That should be his key focus, and let Priyanka lose in UP. What do we have here? This is what the BJP and Yogi are going to be up to. Invasions added foreign words to our dialect, says Yogi Adityanath. The other thing, let me tell you, social media is totally, all the BJP MLAs and Karyakartas are continuing to going on about Taliban. You see what the design is, right? Thank God for the High Court. High Court stays ASI survey of UP's Gyan Vapi Mosque. That's more important. And this is the other thing that everybody's got to figure out what to do with. OBC outreach. Pradhan named BJP in charge of UP election. Pradhan is a OBC, right? But then you have this. BJP appoints senior ministers as in charge of elections in 5 states. Is that going to matter? These guys are faceless. Nobody knows these. I mean, who the hell knows these people? Fadnavis? Oh God. I mean, those guys are gone, right? Then what do you have? BJP infighting out in open. MLA targets Kataria. Latter backs down. This is the alliance that the Congress should be looking at a level, not only at the national level, but also for the Northeast. Didi meets Sonia to forge united front. Congress veterans Didi meet showcase new terms of engagement. TMC Congress ties warm up as Didi Delhi trip starts today. And then this is the other stuff that to worry about. The Maharashtra government is working well. It's a fountain of money, and the BJP doesn't like it. They're getting nothing out of it. So they're going to keep trying to destabilize it. They've not done it. But you got to worry because you got people in the Congress that continue to try and shake this, right? Patole at it again says Sharad Pawar is MVA government's remote control. Well, Patole is a nobody, right? NCP and BJP can never join hands, says Malik. This was the other thing that had been started. NCP betrayed us in 14. Congress will go solo in 24. Patole had no right to say that. After Pawar's straight talk with Congress leaders, Patole says NCP chief is government remote control. That's really funny. That's Patole here. This is a problem with the Congress and their egos, right? Congress committed to strengthening Maharashtra alliance government, AICC in charge, finally. And what's happening, you're going to see the weaknesses in Maharashtra, right? BJP sees spate of resignations over non-induction of Pritam Munde. You have upset Pankaj Munde talks of attempts to sideline her in BJP. Then you got this issue. You had a BJP Tamil Nadu guy, right? And you got to see this. Congress DMK accused BJP of trying to divide TNS Kongu Nadu Sparks. No, and that's the important part. They will try and divide it, okay, folks? And this is where I like what's come back. Carbon dating shows Tamil Nadu civilization 3,200 years ago and 3,200 years old, and this is running concurrently with the Indus Valley civilization, and it takes away the platform of this Hindutva Vedic narrative forever. And this is the important part, and I think this is the message that's being sent by Stalin, and it's a thing that should be noted at the center. Projected as hardliner, won polls on secular credentials, says former Congress councillor, and this is in Delhi. This is the important part, folks. The Congress must make sure that its existing government stays stable. Punjab, Rajasthan, Maharashtra, critical there. Folks, more later.
इस तरह हाईवे पे गाय हैं फिर ये सर बाहर गांव से लोग आते हैं, जो कि यहाँ पे कोई चारागाह तो बना नहीं है, ना ही कोई गौशाला बना हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे हमारे कोई गौशाला नहीं बना हुआ है। वे यहीं फुटपाथ पे रहती हैं और रात में गाड़ियाँ निकलती हैं, एक्सीडेंट होता है, कभी कदा तो 2-4 गाय मरी मिली। इधर पेट्रोल महंगा कर देते हैं, उधर जो है ना राशन दे रहे हैं, तो उससे फायदा है क्या कि एक हाथ से मारो एक हाथ से लो, उससे क्या फायदा है? 99% लोग तो परेशान हैं। 5 किलो अनाज में अगर योगी जी 1 महीना खा लें, 2000 रुपए 6 महीने में दिए जा रहे हैं। ये देखिए सड़क पे गौ माता आराम से मूत्र विसर्जन कर रही हैं और बड़े बड़े लोग कहते हैं गौमूत्र से फायदा होता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देखिए कितनी सारी गौ माताएं हैं, सब सड़कों पर हैं। ये राजधानी लखनऊ से हम सिर्फ 25 किलोमीटर दूर जगह हैं, मलूकपुर गांव है। निकल के आ रहे थे, हाईवे दिखा और हाईवे पे हमें ये गायों का हजूम नज़र आया। सांड हैं, बैल हैं, गाय हैं और हम बड़े हैरान थे कि हाईवे पर ये गौ माता इतना आराम क्यों कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है कि गौ माता के लिए बड़े बड़े काम किए गए हैं, लेकिन इतना काम कि हाईवे पे सड़क पे वाहन कम है और गाय ज्यादा हैं। जो संख्या बल कही गई है लगभग 5 से 6 लाख किसान आएंगे, तो संख्या बल दिखा करके आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, दबाव बनेगा। अब हम डंडे थोड़ी मार सकें भाई, हम जनता के डंडे थोड़ी मारेंगे भाई। हम उस देश के वासी हैं, उन नीतियों पे चलते हैं जिस देश में गांधी जी रहते थे, जिन नीतियों पर गांधी जी चले गए। अब हम ये तो कह नहीं सकते आयुष सिन्हा की तरह कि सिर फोड़ो कुछ फोड़ो, लेकिन मुझे यहाँ कोई नजर नहीं आनी चाहिए। सिर भी फोड़ रखा, भाई के टाके भी आ रहे। ठीक इस तरीके के तो हम अपनी बात को कैसे रखेंगे? खाप पंचायत के जरिए, जिले पंचायत के जरिए, प्रदेश स्तर की पंचायत के जरिए, छोटी छोटी पंचायत, गांव की पंचायत के जरिए, चौपाल पंचायत के जरिए, इस तरीके से तो हम अपनी बात को रखेंगे, तो वही हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी नरेश टिकैत जी आए थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा है, मैंने पूछा कि सर ये महापंचायत करने का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के सरकार ने सुना नहीं, तो कह रहे हैं महापंचायत हम कोई शौक से नहीं कर रहे हैं, हमें मजबूरी पे करना पड़ रहा है। तो मजबूरी, तो एक बात बताओ, जब हमारी कोई बात नहीं सुनेगा तो हम अपनी बात को कैसे पहुंचावेंगे? या तो 10, 20, 50 आदमियों की कमेटी जाएगी, है ना, या उनसे बात करने के लिए वो हमसे आवेंगे। जब ये सारे मामले विफल रहे, फिर हमारी मजबूरी हो गई पंचायत करना, तो हम अपनी बात को पंचायत के जरिए रखेंगे ना कि हम इस सरकार से बहुत ज्यादा परेशान है, इन बिलों से बहुत ज्यादा परेशान है, और जो इनकी नीति चल रही है कि सिर फोड़ो ये फोड़ो, हम उससे भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मन से कल जो संबोधन होगा 20 लोग बोलेंगे, क्या उस 20? Welcome, folks. The stuff that are contradictory for the BJP and a tool for the opposition if they can use it, especially the Congress. I was framed for being a Dalit. 6 years of my life were taken from me, and this is important. This is what happens in the Raj of the BJP. Then you have this. To avoid 2018 repeat, BJP looks to win back SC, STs and MPs. How do you do that when you continue to beat up on them regularly? That's happening all the time. And as I said, luckily the High Court came back strongly against this. High Court seeks Center, UP replies on appeals against ASI survey of Gyan Wapi Mosque, and I think those things should happen. And this is the weakness in the UP that we keep to, all the opposition needs to focus on. This guy's Ram Iqbal Singh, UP run by bureaucrats, party workers face lathis, his BJP leaders, and he's really upset and he needs come back with it. And what's the Congress doing, right? It's Sonia rejigs House panels, brings in G23 members, and that's important. And this is an important statement that the Congress made. Congress supports renaming Khel Ratna Award, says re-Christian Stadia too. Yeah, if you're going to do the Rajgar, so this is like hypocrisy at its worst, and they got to keep bringing it out. And the Youth Congress must be out there all the time in your face. Youth Congress protests in Madhya Pradesh, 4 leaders booked. And you got to watch this. Was offered rupees 1 crore ministry berth to topple Soren government, claims Congress MLA. This is what the BJP will continue trying to do. Topple. Congress moves privilege motion against MOS. And this is important because this MOS of health actually lied. And focus on this, on inflation. LPG refills costlier by 25 rupees. Diesel prices cut by hardly anything at all. Cooperation Ministry attack on states' rights Congress. This is very important, and I think the Congress, the NCP, everybody must go after this because this is a very insidious move to capture and conquer the funds of all the cooperative banks. And this is where Rahul is lashing out, and he's got to stay strong. Rahul lashes out at government over atrocities on tribals and Muslims. Don't back down with this. Irrespective of the people bringing up the Taliban, you cannot compare. That's what the BJP is trying to do, is kind of
equate the Taliban with the Indian Muslim, and this is just a very, very difficult position for our foreign policy, and the Congress must bring it out. Center's privatization plan to create monopoly. Rahul, he might be right there. We need to privatize, but it needs to be done smartly, done transparently. Police trace tractor owner register FIR. This was the tractor rally that Rahul Gandhi took out, and that's funny. That's the stuff he should be doing more. Cops to probe failure to halt Rahul's tractors march to Parliament. It obviously bothered them. You got to remember that. You got to go out on the street. Tejasvi Yadav showed us, Mamta showed us. This is the only way to beat this troll poll government. Okay. Then this is the one. Explain Punjab Neta's JNK Pakistan remarks nada to Congress. This is the process to destabilize Punjab. Got to be watchful, very, very careful. Folks, more after this for the main weakness of another state of the BJP. Cheers. क्या करते हैं? रोजगार है, कार्यकर्ता कोई सम्मान ही नहीं बीजेपी में। राम मंदिर बनवा दिए, खुश नहीं है? राम मंदिर से क्या मेरा पेट भर जाएगा? बड़ा गुणगान गा रहे हैं बीजेपी के। तो राम मंदिर के आड़ में तो कल्याण सिंह को ले गए, तो वो वोट ले लिया, कल्याण सिंह ने पट भी गए, बाबा जी 18 बार देखने गए और 5 और विधायक बने उनके, अगर बाबा जी क्यों नहीं देखने गए? बाबा जी बताएं, कल्याण सिंह के ऊपर क्या वोट है पूरा? कमलेश दिवाकर जी और रैया से विधायक जी खत्म हुए, कमल रानी खत्म हुई, इनके यहाँ क्यों नहीं गए बाबा जी? कि आप लोग जिस तरह डाउन होता है, लेकिन इतना नहीं हुआ था भ्रष्टाचार जितना अब हो रहा है। गरीब जनता जितनी अब तड़प रही है, परेशान हो रही है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मैं खुद नुकसान में हूँ। देखो, वोट तो देना चाहिए कायदे में, किसान और गरीबों के हित के बारे में जो सोचे, जो हित के बारे में नहीं सोचे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कितना काम किया? ऐसा है कि धरातल पे ऐसा कोई कार्य तो मुझे नहीं लगता है कि जनता के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और आगे का जहाँ तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, तो उस दरमियान तो तमाम ऐसे मतलब विकास कार्य दिखाई पड़े हैं कि जैसे मतलब जो है आपका जमुना एक्सप्रेसवे हुआ, यहाँ पर लखनऊ में रेलवे हुई और गांव गलियों में सड़कों का निर्माण होता रहा। तमाम अन्य प्रकार के बिजली से लेकर के सड़क निर्माण गांव गरीब गली तक और शहरों तक सारा विकास होता रहा है। परंतु वर्तमान समय में पढ़े लिखे युवा आदि मतलब सब बेरोजगारी की चपेट में है, जिससे देश में मतलब जो है आर्थिक प्रॉब्लम है, लोगों के सामने बड़ी परेशानियां हैं। तो इस संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है 2022 में सोच सबसे बड़ा संकट है जो अगर देश और प्रदेश के अंदर, तो वो सबसे बड़ा संकट है बेरोजगारी का। मतलब रोजगार लोगों के पास नहीं है। रोजगार का सृजन जो सरकार करे, और रोजगार का सृजन कब होगा? जब डेवलपमेंट के कार्य होंगे या अन्य कार्य होंगे। हमारा कहना ये है कि बेरोजगारी जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार तो नहीं दिए, बेरोजगार कर दिए। कोरोना के आड़ में मजदूर किसान सब सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, जिसकी आय बढ़ी हो। किसानों की आय दुगनी होनी थी, लेकिन उनकी आय तो घट गई। किसान निधि दे रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा गुणगान बहुत पहले दिया करते थे, दिए थे, वो भी बहुत से किसानों को नहीं मिला। तो 2022 के बारे में मैं अखिलेश यादव इन सब से आगे अपने अनुभव के आधार पर एक एक पारी बहुत ही सोच कर चल रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसी किसी भी जल्दबाजी में नहीं जाना चाहते हैं। लोगों से मुलाकात तो कर रहे हैं, लेकिन धुआंधार तरीके से नहीं, क्योंकि चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं। अखिलेश यादव ये पारी कब खेलेंगे और किस तरह से खेलेंगे, इसकी रणनीति अखिलेश यादव ने पूरी तरह से बना रखी है, लेकिन इसकी खबर कहीं से भी दूसरी पार्टियों को ना लग जाए, इसलिए अखिलेश बड़े ही सहज तरीके से अभी एक एक करके तमाम जिलों में दौरे करने चल पड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव का वो एक्शन स्टाइल, वो सिंघम स्टाइल जनता को कब दिखाई देगा कि एक के बाद एक लगातार वोट पड़ने लगेंगे? तो आपको बता देते हैं कि इसकी तैयारी भी अखिलेश यादव ने अच्छे से की है, लेकिन ये कौन सा महीना होगा और चुनाव के कितने दिन पहले